It is saying that the first non-zero element in the first row is 3. No, the first non-zero element in the first row is 1. The first non-zero element in the second row is 1. Yes, second row, the first non-zero element is 1. There is a non-zero element in the third row. No, because third row all 0 is there. Since there is a row with all elements as 0, determinant of A is equal to 0. Yes, this is right and this is right. Okay. Let's see the next question. So let's see the next question. यहाँ पे यस एक सेट दिया हुआ है जो कि मैट्रिसेस का सेट है. क्वेश्चन कर रहा है इफ S1 is the subset of S consisting of all the matrices in S that are in row echelon form, then choose the correct option from the following. हमें एक S1 सबसेट निकालना है S से जिसमें वो मैट्रिसेस होंगी जो रो echelon फॉर्म में है. तो आइए देखते हैं. मैट्रिक्स ए रो echelon फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसके दूसरे रो का जो लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग एंट्री है, वो फर्स्ट वाले से लेफ्ट में है, जो कि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं है रो echelon फॉर्म की. हर सब्सिक्वेंट रो में जो लीडिंग एंट्री है वो राइट साइड में होनी चाहिए अपने प्रीवियस रो के लीडिंग एंट्री से. तो ए नहीं है. बी में लीडिंग एंट्री 1 नहीं है, तो बी भी नहीं है. सी है. डी ऑल 0 है, तो डी भी है. ई में नहीं है क्योंकि ई के सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री जस्ट नीचे है. एफ, यस एफ इज देयर. जी भी है. एच भी है. आई में ये 1 नहीं है तो आई नहीं होगा. जे है. के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये होता ही है. एंड एल भी है. तो हमारा जो S1 सबसेट बना उसमें आएगा सी डी एफ जी एच और जे के एल. टोटल होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, लेट्स सी. सी डी एफ जी एच जे के एल. सी डी एफ जी एच जे के एल. यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट and the cardinality of S1 is 8. Okay. अगला क्वेश्चन देखते हैं. If S2 is the subset of S consisting all the matrices in S that are in reduced row echelon form, then choose the correct option from the following. Reduced row echelon form में echelon form वाले सारे matrices होते हैं, बस उसमें जो है लीडिंग एंट्री के ऊपर नीचे सब 0 होता है. ओके, तो हम देखते हैं. जो हमारा S1 आया था उसमें आया था सी डी और ई नहीं था. एफ सी डी एफ जी एच आई नहीं था. जे के एल 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसमें रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म कौन सा है देखते हैं. सी रिड्यूस्ड रो है. यस, सी में है 1 के नीचे सब 0 है, इस 1 के ऊपर नीचे सब 0 है, तो सी होगा. डी ऑलरेडी सारे 0 हैं, डी भी होगा. और एफ में देखिए इसके ऊपर 1 है तो ये नहीं होगा, एफ नहीं होगा. जी में इसके ऊपर 3 है, ये भी नहीं होगा. एच है, एच होगा. जे भी है. अब के आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये तो होता ही है. एंड एल भी है. तो हमारा फाइनली निकल के आया सी डी एच जे के एल. 1 2 3 4 5 6. ओके, देखते हैं S2 में क्या होगा. सी डी एच जे के एल. सी डी एच जे के एल हमारा ऑप्शन सही है. कोऑर्डिनेट 6 है. ओके, तो
Come to the next question. Question number 4. Consider the following system of linear equation. Choose the set of correct options. ओके, तो क्या है इसका लीनियर इक्वेशन, एक बार हम लिख लेते हैं. 0 1 0 0, फिर ऑल 0, देन 1 1 0 0 देन 0 0 1 1 0 0 1 1, और ये है x1 x2 x3. इसमें सारा 1 होगा, x1 x2 नहीं, वो तो x1 x2 है, 1 नहीं होगा. x1 x2 x3 और x4 इज इक्वल टू b में 1 1 होगा, 1 1 1 1. ओके, तो कम टू द क्वेश्चन. क्या कह रहा है? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होगा इसका? नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म, रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म, रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे? रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म या और echelon फॉर्म ये तो है नहीं वैसे, इसको कन्वर्ट करना होगा. कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें कर सकते हैं, हम रो रो का शिफ्टिंग कर सकते हैं. इस रो को सबसे नीचे ला सकते हैं और इस रो को सबसे ऊपर ले जा सकते हैं. तो ये हो जाएगा रो echelon फॉर्म में हो जाएगा, और रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म भी आ जाएगा. तो इसमें सारी एक रो पूरा 0 है और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा. ओके, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 वेयर ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि इसका एक रो पूरा 0 इसलिए इसका डिटरमिनेंट 0 होगा. ठीक है, ये भी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन. ओके, एक बार हम इसको लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन को. यह है 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0. ओके, कह रहा है कि x1 एंड x2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमने पढ़ा था. डिपेंडेंट वो होते हैं जिसमें जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री होती है, एंड इंडिपेंडेंट होते हैं जिसमें लीडिंग एंट्री नहीं होती. तो इसमें जो होगा x1 x2 और x3 ये लीडिंग है, ये डिपेंडेंट है, बाकी इंडिपेंडेंट. x2 इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, सही. x3 x4 इंडिपेंडेंट, नो. x4 इज एन इंडिपेंडेंट, यस. तो सेकेंड एंड फोर्थ इज राइट. Come to the next question. Suppose a system of linear equation consists of only one equation and four variables as follows. So the system of linear equation consists of only one variable, only one equation and four variables as follows. Where a is a constant, find out the number of independent variable. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? इसमें 1 1 1 1 सब है, तो कोई भी इंडिपेंडेंट जो होता है लीडिंग वाला तो एक ही है, x1 ही लीडिंग होगा. तो बाकी तीन जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे. तो x1 डिपेंडेंट, रेस्ट इंडिपेंडेंट. ओके, तो यहाँ का 3 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट ए बी डिनोट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये है मैट्रिक्स. यहाँ पर ए है 2 1 1 3, बी है 3 4. Let the matrix 1 0 0 1 AB denote the reduced row echelon form of the augmented matrix corresponding to the system of linear equation above. Which of the following options are correct? The value of A and B cannot be determined from the given information. Value A and B can be determined from the given information. 1 2 1 2.
A is equal to B, but exact value cannot be determined from the given information. Let's see what will be the exact value. The matrix is 2 1 1 3 and 3 4. Solve this equation. As this matrix is not in the echelon form of matrix, so here unique solution is there. So you can multiply 2 here, so it will be 2x1, it will be 6x2, and here it will be 8, and after minusing you will get minus 5x2 is equal to minus 5, so x2 is equal to 1, and if you put x2 here, so 2x1 is equal to 3 minus 1, so x1 is equal to 1, so x2 is equal to 1 and x1 is also 1. Okay, let's see the options. Let's see the options. A is equal to B is equal to 1. Okay, there will be a unique solution, so no other solution is possible. The solution for x1 and x2 are not unique hai. x1 is equal to x2 is equal to 1 and the system of linear equation has a unique solution. x1 is equal to x2 is 1 is the solution. However, it is not possible to determine that the system equation has a unique solution or not from the given one. No, it can determine the system has a unique solution or not. If there is a echelon form of matrix, then only many solution is possible or no solution is possible. This is not a echelon form of matrix, so here unique solution is possible. Okay, come to the next question. Question number 8. Ax is equal to be a matrix representing of a system of linear equation where A is 4 by 4 matrix. Let the reduced row echelon form of A is this. Which of the following options are correct? x1 is dependent on x2. x1 is dependent variable, okay, but x2 is not available, so x1 cannot be depend on x2 because x2 total is 0. So x1 is independent, right, but it is not dependent on x2. x3 is dependent on x4. x3 is dependent and it is dependent on x4 because x4 is a independent. There is not a leading entry, so x4 is independent variable and x3 is dependent, so x3 depends upon x4. You can calculate the x3 value according to x4. Okay, x2 is an independent variable. Yes, x2 is an independent variable because it is not having any leading entry. There exist infinite many solutions for the given system of linear equation. There is many infinite many solution for the given of linear equation because it is an echelon form of matrix, so many solution is possible. Come to the next question. Be a matrix. Read the question. Find the number of independent variable. Okay, it is in a reduced row echelon form matrix. Here x1 is dependent, x2 is dependent, but x3 is not dependent. It is independent variable.
So independent variable is 1, only x3. If x1 is equal to 0 is given, then found the number of solution of the given system of linear equation. If x1 is equal to 0, okay, then what will be the number of solution? If x1 becomes 0, the first column will be 0, then only x2 and x3 will be two variable, and it is, this matrix is not in echelon form of matrix, so here unique solution is there, exist.